आज हम लोग डील करेंगे इंटरमीडिएट सीए इंटरमीडिएट कोर्स का ग्रुप 1 का पेपर 1 का फर्स्ट पेपर, मतलब अकाउंटिंग जो हमारा पेपर 1 है सीए इंटरमीडिएट के, उसके फर्स्ट मॉड्यूल का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो विद इट पॉइंट हेलो एंड वेलकम टू मैनेजमेंट IQ। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पे डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो स्टार्टिंग माय वीडियो विद द वेरी फर्स्ट concept in the chapter 1 is generally accepted accounting principle, or in other word we used to say it gap। तो आपको बता दें कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है एज पर इट्स डेफिनेशन, ये एक टाइप का जनरली एक्सेप्टेड कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्लाई होते हैं। In a particular way, I can say that it is a common set of accepted accounting principles, standard and procedures that entity must follow when it prepare and present its financial statement। जो हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है वो इंटरनेशनल लेवल पर IFRS के नाम से जाना जाता है, जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, एंड एट नेशनल लेवल इट इज नोन एज IND AS विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा होता है वो रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशू करते हैं गवर्नमेंट। एग्जाम्पल MCA मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज इन कंसल्टेंट विथ NFRA नेफ्रा नेशनल अकाउंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नेफ्रा and ICAI for non-corporate entities। Moving to our next topic, which is accounting standards deal with the following aspects। तो जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है वो कुछ एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है, विच इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, movement of events and transaction, presentation of events and transaction and disclosure requirement, or in other word we call it disclosures। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं हमारा, ठीक है। जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पर होता है गैप विच इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसको हम लोग कहते हैं IFRS, एंड जो इंडियन लेवल पर होता है उसे हम लोग कहते हैं IND AS विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन इशू करता है फॉर कंपनी, तो कंपनी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी अफेयर्स इशू करती है, एंड फॉर अदर कंपनीज अदर देन कंपनीज तो ICAI इशू करती है। ओके एंड ये जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है जो इंटरनेशनल और इंडियन लेवल पर बन रहा है, इशू हो रहा है, ये किसके साथ डील करती है? सो ये डील करती है RMDP। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन विच इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इवेंट ट्रांजेक्शन, मेजरमेंट ऑफ इवेंट ट्रांजेक्शन, प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोजर। सो ये जो हमारा जितने भी गैप के अंदर रूल बनते हैं वो सारे डील करते हैं R रिकॉग्नाइजेशन, M मेजरमेंट, P प्रेजेंटेशन एंड D डिस्क्लोजर्स। So coming to the point, moving on to the next topic which is benefits of accounting standards। okay, so हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है वो बहुत यूजफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट which reduce confusion and variation in accounting treatment and presentation। One must disclose the accounting policy used under accounting standard 1। सेकेंड इसका बेनिफिट है कि रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डिस्क्लोजर, मतलब कि ये रिक्वायर करता है एडिशनल डिस्क्लोजर टू हेल्प रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। थर्ड इज कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो टाइप के कंपेरेबिलिटी होते हैं, फर्स्ट होता है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा। जो इंटर होते हैं वो अदर कंपनी के साथ होते हैं और इंट्रा अपने कंपनी के अंदर होते हैं। And the next point is reduction of scope for creating accounting, which means twisting of accounting policies to produce financial statement favorable to a particular interest group। Moving on to the next topic, which is standard setting process। ASB Accounting Standard Board
इट इज अ बॉडी विच लुक ओनली फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएसबी सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर ही ध्यान देती है, उसके अलावा एएसबी का और कोई काम नहीं है। सो एएसबी कंसीडर IFRS which is International Financial Reporting Standard and IND AS which is Indian Accounting Standard, and then they frame our accounting standard. Now look on the 2 points which I am going to say, and if you can note it down, note it down. What is involved in the standard setting process? ICI took leadership role in constituting accounting standard board. ASB then considered IFRS and IAS while framing accounting standard in India. Next is composition of ASB include representation of industries, ASSOCHAM industries, regulatory, academic, government department and many more etc. Next is, although ASB is constituted by ICAI, it is independent in the formulation of accounting standard, which is if they want to make new accounting standard, they are independent to make new accounting standard. Now NEFRA recommend these standard to Ministry of Company Affairs, and Ministry of Company Affairs has to spell out the accounting standard application for companies to India. Now let me explain you with a small story or in a story type format. जो हमारा ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंस्टिट्यूट वन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ओके, ASB ये एक बॉडी है जो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए है। दे हैव सम कम्युनिटी। नाउ दीज ASB दे कंसीडर्ड IFRS and then they frame our accounting standard. Okay, so now these ASB include some representative from various industries. With association of these industries, our expert people, now they represent. After that, NEFRA will recommend it to the MCA, Ministry of Company Accounts, because normally these accounting standards are applied by corporate sector. So now then MCA will apply these accounting standard to everyone. So our standard setting process, I think, must be clear. And let me tell you the points one again. First point is identify area where there is conflict. Second, constituting of study group, prepare of draft, got some views, finalization, comment received on ED, modification of the draft and issue of accounting standards. So I hope you have understand standard setting process. Moving on to the next topic. अगर आपको कोई query है तो please comment section में पूछिएगा. Moving on to the next point which is need for convergence toward the global standard. क्या जरूरत आन पड़ी जो हमें अपने accounting standard को global accounting standard के तरफ converge करना पड़ा. So every country has its own set of rules and regulation, we all know. To raise capital from international rules are different. इंटरनेशनल मार्केट से अगर हमें फंड रेज करना है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है, इंडिया का डिफरेंट है. So therefore translation and reinstatement is utmost important. Okay, so comparing financial statement based on similar accounting standard. Multiple type of accounting standard are on to the world is against the public interest. Okay, so as it create confusion, error, frauds, cure a single set of global standard. So for cure मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था तो उसके लिए रेमेडी तैयार हुआ कि हम लोग एक सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड तैयार करते हैं जिसको सब फॉलो करेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में फंड रेज करने या फंड इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें उन लोग का और अपने में वो अंतर नहीं होगा. सो इस कारण से एक सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड तैयार हुआ. नाउ इट क्रिएट एबिलिटी टू कंपेयर. अगर सिंगल सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन है तो ये कंपेयर करने में भी बहुत आसान इजीली हो जाता है. फॉर कंपनीज विथ ज्वाइंट लिस्टिंग इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री द कन्वर्जेंस इज वेरी सिग्निफिकेंट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. सो हमारा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये सेट हुआ था विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स.
A London-based group named as International Accounting Standard Committee (IASC) was established in 1973. And the IASC International Accounting Standard Committee comprises professional accounting bodies of over 75 countries including ICAI. IASC reconstruct their organization with resulted information of IASB, which is till 31st 3 2001 standard issued by IASC are known as IAS, and after 1st 4 2001 standard issued by IASB are known as IFRS. Is it clear? Now moving on to the next point, which is IFRS as global standard. IAS issued by IASC and adopted by IASB. समझे? मतलब IAS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, जो कि बाद में अडॉप्ट कर लिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा. IFRS इशूड बाय IASB सिर्फ बोर्ड का ही है. IFRS जो कि इशूड बाय IASB है वो सिर्फ बोर्ड का ही है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का ही सिर्फ है IFRS. इंटरप्रिटेशन ऑन IAS और IFRS इशूड बाय IFRS इंटरप्रिटेशन कमिटी. अगर कोई डाउट ही हो तो उसके लिए एक अलग कमिटी सेट करा गया है. इंटरप्रिटेशन ऑन इंडियन International Accounting Standard issued by SIC, which is Standard Interpretation Committee. So IFRS के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेस्ड होते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड पे. प्रिंसिपल बेस्ड set of standard based on reality can be changed according to the situation. अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमारा जो उस स्टडीज है वो चेंज कर सकते हैं हम लोग. Enhanced transparency and comparability of financial statement change as global standard or emerged as global standards. Moving on to the next topic, which is becoming IFRS complaint. So by adaptation process, ये दो टाइप्स होता है, by adaptation process and by convergence process. Adaptation process में as it is जो है उसी को फॉलो करना है, and convergence process में partially change in IFRS called as curve ins and curve out. कुछ चेंजेस करके एक्स्ट्रा मिक्स करके अगर कोई चीज बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस प्रोसेस. ओके, एंड एडेप्टेशन प्रोसेस वही चीज में थोड़ा सा और कुछ हल्का फुल्का चेंज ना कर, मतलब ना के बराबर ही चेंज करके अडॉप्ट करके किसी न्यू चीज को बनाया जाता है, उसको कहता है एडेप्टेशन प्रोसेस. एंड इट इज यूज्ड IFRS प्योरली. IFRS इसको प्योरली यूज करता है. The next point is benefit of convergence with IFRS. Cross-border flow of money, we did many from outside market, international investor, global listing in different stock market. Now our company was listed in the National Stock Exchange either or Bombay Stock Exchange. But suppose we require to enter into UK Stock Exchange. In that case, we need to follow global standards. And therefore for global listing, so for this we have to follow global account standard, Indian International Accounting Standard. Comparability of financial statement, it's a quite often. Elimination of costly requirement, we all know. Enhance accountability, greater transparency, reduce operational changes, lower risk of errors of judgment. Now moving on to the next topic, which is convergence to IFRS in India. Application of IFRS in India considered legal and other condition prevailing in India. Deviation from corresponding IFRS is required.
And on the other hand, AS being consultant with MCA decide to have two sets of accounting standard, which is Indian accounting standard and existing accounting standards. Next is concept of accounting standards. Indian accounting standard are IFRS converged standard issued by the central government with certain curve outs. Guys, keep in mind that Indian accounting standard converge based on both international accounting standard and international financial reporting standard. Got it? So now I'll tell you the steps for notification. Formulation of by Accounting Standard Board of ICAI. Next step is sent to NEFRA for consultant. After that sent to central government for notification. अगर इसकी benefits देखें तो globalization and liberalization, transparency of financial statement, comparability of financial statement, enhanced disclosure requirement. Keep in mind that Indian accounting standard are named and numbered same as corresponding international accounting standard. Clear? इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है INDAS वो IAS के नेम एंड नंबर से बिल्कुल पूरा मैच खाता है. बट however for INDAS corresponding to IFRS add 100 to IFRS number. Got it? मतलब कि अगर हमारा IFRS नंबर 1 है so INDAS का नंबर 101 होगा. Got it? Moving on to the next point, which is curve out and in Indian accounting standards. Why? ये होते क्यों हैं? It is decided to converge and not to adopt. IFRS thus departures, change in terminology, removal of option in accounting principles and deviation to accounting principle stated in IFRS. Curve out means departure. It is decided to converge and not adopt. Keep in mind that removal is not a curve out. Curve out का meaning होता है only deviation is curve out due to change in terminology. मतलब कि जो changes होता है उसको हम लोग कहते हैं curve out. For example, in IFRS, statement of comprehensive income, statement of financial position, and in INDAS, statement of profit and loss and statement of balance sheet. Curve ins का मतलब होता है additional guidelines given in Indian accounting standard than there what is given in IFRS. Formulation of Indian accounting standard departure resulting into curve out, not resulting into curve out. We take it two options: deviation from accounting principle stated in IFRS, removal of option accounting principle and participated in INDAS wise IFRS. Moving on to the next topic, which is roadmap for implementation of Indian accounting standards. फर्स्ट हमारा कंपनी अदर देन बैंक, NBFC एंड इंश्योरेंस कंपनी. सो 1 अप्रैल 2015 तक विद कंपेरेटिव था. 1 अप्रैल 2016 तक लिस्टेड कंपनी नेटवर्थ INR 500 करोड़ लेस देन और इक्वल टू. Listed company having a net worth greater than or equal to 500 crore and holding subsidiary, associate and joint venture of above. And phase 2, which is 1 April 2017, listed company not covered in phase 1. Okay, unlisted company having net worth of greater than 250 crore and holding subsidiary, associate and joint venture of above. For non-banking financial companies, it is divided in two phases with cooperatives. First phase is till 1 April 2018. NBFC listed or unlisted having net worth of greater than 500 crore holding subsidiary, associate and joint venture of above other than those prevailing covered. And second phase is on 1 April 2019. Listed NBFC not covered in phase 1, net worth 500 crore. Unlisted NBFC having net worth of greater than INR 25 crore but
less than 500 crore and joint holding subsidiary associate joint venture of favor other than prevailing carried on. Unlisted NBFC having net worth of 250 crore greater than shall not apply accounting standard. Voluntary adoption of IND AS is not allowed. Application for both consolidation and individual financial statement must be given. For scheduled commercial bank excluding regional rural bank initially required to apply IND AS from 1st April 2018. Later RBI deferred implementation of IND AS by first year, that is from 1st September 2019. Later RBI from 1st September 2019 of IND AS till now. Further notice, urban cooperative bank UCBS and regulatory rural banks RRBs are not required to apply for IND AS. And for insurance and insurance company, effective date of implementation not yet finalized and would be finalized after finalization of IFRS 17 by IASB. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो. अगर वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई क्वेरी या डाउट हो तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.